बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नाजरीन, हैदर टीवी के प्रोग्राम एनरूट कनाडा का सिलसिला जारी है। हमारे साथ पिछले प्रोग्रामों में भी टोरंटो के मायनाज पाकिस्तानी कम्युनिटी के लॉयर इमिग्रेशन के जनाब ज़ीशान रज़ा शेख साहब मौजूद हैं आज भी, और आज का हमारा मौजू है स्टूडेंट वीज़ा। तो ज़ीशान शेख साहब से इस सिलसिले में हम लोग बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन, आपको ज़हमत दे रहे हैं और बहुत मुफीद मालूमात हमारे हैदर टीवी देखने वालों को मिल रही हैं आपके तवस्सुत से। थैंक यू। तो आज का मौजू हमारा है स्टूडेंट वीज़ा जी। तो इस सिलसिले में आप बताइए देखने वालों को। हाँ, सबसे पहले लोग ये पूछते हैं, काफ़ी लोग मुझसे कांटेक्ट भी करते हैं पाकिस्तान इंडिया से, हम कैसे आ सकते हैं कनाडा स्टूडेंट बेसिस पे जी। और सबसे पहले मैं इनको बताता हूँ, यू हैव टू राइट द IELTS टेस्ट। अच्छा। वो भी एकेडमिक टेस्ट, दो किस्म का IELTS टेस्ट है। नंबर वन, देयर इज ए एकेडमिक IELTS टेस्टिंग एंड देयर इज आल्सो ए जनरल टेस्टिंग। राइट। बट फॉर स्टूडेंट वीजा पर्पसेस इनके एकेडमिक IELTS की ज़रूरत है, राइट? A CPLIP is also another accredited English what's it called, language testing center, but like a majority लोग करते हैं IELTS। So जी साहब, आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, IELTS के अलावा भी कोई तरीका होता है? Yeah, CPLIP, right? Remember I told you is another. It has to be an accredited English language agency, right? Okay. Recognized by the Canadian government. For most South Asians, I'm talking from South Asian perspective, right? Right. In Canada and India, in Pakistan, India, mostly people are writing the IELTS test. Okay. Right? वो IELTS लिख रहे, right? अच्छा. International English Learning, you know. Yeah. The system, right? International language for church IELTS, right? So the testing system, right? Right. Right. So basically, as a lawyer, I just say IELTS to everyone, right? Sometimes I forget even the acronym, right? Yes, Hanji. So basically, but there's others. As I mentioned, there's other testing the. Language centers that you could go to as well, but the most recognized, the majority of the South Asian population will IELTS के लिए जाते हैं, right? हाँ जी, for and number one, they need a academic IELTS result. अच्छा. Right, and लोग पूछते कितने band, right, for student visa, right? So overall minimum they should get 6 band. 6 band. हाँ जी, overall minimum, that's the minimum. But अगर वो चाहते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी में admission हो जाए, अच्छी कॉलेज में हो जाए, they should strive for as best as possible. Right. 7 to 8, right? अगर possible है, right? हाँ, बिल्कुल सही कहा। Sorry, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ again. Bands क्या होता है, ये एक सवाल मेरे पास आया है, तो पूछ रहे हैं कि bands के मुताबिक। Bands is a testing system. Integrated by these, right? But like a points. Yes, a point-based system, right? So it's from. So what happens in the band system is that they test you in reading, writing, listening, and speaking. In categories में आपको test करते हैं. So and it's a grading system, this band system, right? Or if it's better if you get 6.5, 7, 8 bands. अच्छा. और लोग ये पूछते हैं अगर इनका 6 minimum नहीं आते फिर क्या करें? मैं कहा IELTS में there is no limit to writing. So अगर आपका for example 6 से कम आ गया overall bands, पर उसको आप दोबारा तैयारी करें और दोबारा अप्लाई करें, दोबारा अप्लाई करते हैं, तो इसका कोई लिमिट है कि आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा कर सकते हैं या नहीं? लिमिट नहीं है, बट इनका फीस भी है। अच्छा, फीस है। I think depending on the country they are, पर हर दफ़ा इन्हें फीस लिखना है। अगर पर आपने ये देखना, right? लिमिट आप लिख सकते हैं IELTS, right? And I like to say the IELTS is only valid for 2 years. Okay. Right? ये भी important सवाल है, right? अब इसमें 2 तरह के होते हैं, एक जेनेरिक और एक एकेडमिक। तो इसमें they're valid for 2 years, right? हाँ जी। Valid for 2 years. अच्छा, ठीक। तो इसमें फिर आगे क्या प्रोसीजर? फिर आगे ये प्रोसीजर, जब वो IELTS लिखेंगे, फिर वो they have to send their previous education transcripts, IELTS test, अच्छा, as well as their, I think, their personal documents directly to the education institutions. अच्छा, जहाँ वो apply करना चाहते हैं, right? ठीक। College हो या university हो, depending on their program of interest. Right. So स्टूडेंट वीज़े में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से कोई अप्लाई कर रहा है स्टूडेंट वीज़ा, तो उसको क्या बैंक बैलेंस कोई एक सर्टेन अमाउंट है जो दिखानी होगी या? हाँ, बिकॉज यहाँ अगर आप आना चाहते हैं कनाडा, नंबर वन द गवर्नमेंट ये देखते हैं आपके पास आपके पैसे है, नंबर वन है। और स्टूडेंट वीज़ा आपके लिए द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा विल चार्ज यू इंटरनेशनल फीस एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, सो यू विल बी पेइंग डबल और 3 times more compared to a permanent resident or a Canadian citizen of Canada. पर आपने ये देखना अगर आपके पास फंड्स है अवेलेबल, फिर काफ़ी फंड्स है to do a student any program, especially master's programs, where it's expensive, right? I'll be frank, it's expensive to do master programs in Canada. So to do an undergraduate, you have to pay up, or even to do a college diploma, right?
and आप लोग ये पूछेंगे कितने what's the approximate cost for any Right. course, right? So it's all depending on the program, right? Okay. So for colleges, say a 2-year college program, you'll start with that. जी. It could be anywhere from $5,000 to $10,000 per semester. अच्छा And even before applying for a student visa, you have to show proof of payment of first semester. अच्छा आपने जो जहाँ जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दिया जी वो लोग चाहते हैं और नई गवर्नमेंट चाहते हैं वो आप फर्स्ट सेमेस्टर का एडवांस फीस दे अच्छा एंड फिर आपने ये गवर्नमेंट को दिखाना देखो मैंने एज प्रूफ फंड्स मैंने को फर्स्ट सेमेस्टर फीस भी दिया है और ये मेरे बाकी अकाउंट में है फॉर टू पे फॉर the next semester as well, right? Right, So, right. वो गवर्नमेंट चाहता है आपके पास and ये आपका माँ बाप का बैंक में अकाउंट ना हो या आपका पर्सनल अकाउंट and ये शायद maybe might be the Right, next right, question, right? ये right. शायद next question. जी जी इसमें एक चीज़ और ये जहन में आ रही है कि जो एकेडमिक होता है वो किसी HSC से लाइक हायर एजुकेशन के थ्रू भेजना होता है या आप डायरेक्ट खुद वो कर सकते हैं This is taking place at the IELTS center. एक center होता है हर country में. अच्छा They have designated IELTS centers. वहाँ आपने सिर्फ आपने ऑनलाइन बुकिंग करना है, रजिस्ट्रेशन करना है. अच्छा फिर आपको डेट देंगे. फिर आपने आना, फिर आपने तैयारी करना है, प्रैक्टिस करना है, फिर वहाँ जाकर फिर आपने टेस्ट लिखना है. अच्छा और यस. हाँ अच्छा जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप लेके जाते हैं तो वो क्या डायरेक्ट के हायर एजुकेशन उसके थ्रू भेजना होते हैं या आप ट्रांसक्रिप्ट्स को पूछ रहे हैं, राइट? और ट्रांसक्रिप्ट्स, राइट? आप ऑनलाइन यूजुअली यस डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज यूनिवर्सिटी अगेन. अच्छा अगर वो पूछते वो कहते हैं सेंड मोस्ट इंस्टीट्यूशन आर सेइंग सेंड डायरेक्टली कांटेक्ट आप अपना प्रीवियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कांटेक्ट करें तो वो डायरेक्ट भेजेंगे. अच्छा या वो पूछे सिर्फ आप स्कैन करके भेजें, राइट? These are the requirements per the college university. जहाँ से एडमिशन ले रहे हैं इनका क्या requirements है, right? So अगर वो कोई college university पूछते हैं आपका क्या वो ये depending on their requirements. Whether they will be directly from the original transcripts directly from the institution. अच्छा या अगर आपके पास कॉपी है then you can send directly by email, right? राइट इसमें ज़ीशान साहब ये स्टेप्स क्या होते हैं कि लाइक पहले आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें फिर आप इंग्लिश टेस्ट के लिए जाएं फिर या आप पैरेलल चला सकते हैं साथ साथ नहीं सबसे पहले you need to write the IELTS test, right? अच्छा जब आप एडमिशन लेना वो सबसे they'll take proof of English language. The thing is एक चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ if you want to avoid the IELTS test and spend some additional time you also have the option of taking the English language course before beginning your course in Canada. ओके but इसमें शायद एक सेमेस्टर और लगना या एक साल और लगना. अच्छा अच्छा so ये भी आपके पास ऑप्शन है. अगर यूनिवर्सिटी depending on the college and university if they have the English course program available या कोई affiliate college they are वो कहते ठीक है हम आपको एडमिशन देंगे. सही आपने पहले इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स लेना यहाँ Right. maybe 4 months 5 months maybe 6 months to a year. अच्छा You have to show आप पहले ये इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट करेंगे जी. फिर आप अपना जो the second year then you begin your or the next semester you begin your course. तो पहला स्टेप ये है कि आपको इंग्लिश टेस्ट के लिए अप्लाई करना है जाना है उसको पास करना है देन यू गो फॉर admission. Oh yeah, just as I mentioned before, yeah, you can apply directly to the college university without the IELTS test, and then and if they have a program available, up English program they say course they say at that college before beginning your program as a prerequisite for the program, right? Yeah, option है. Yeah, आप IELTS लेके या आप directly if the college has the opportunity, right, for the English test. So not the English test, the English language course. Okay. आप वहाँ से ले सकते थे English language course, right? अच्छा ठीक तो ये एडमिशन के लिए क्या लाइक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के उस पे जाना होता है या कोई पोर्टल है या कोई इस तरह का है जहाँ पे आप अप्लाई कर सके मुख्तलिफ जगहों पे एक साथ? Usually हर कॉलेज यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन है, राइट? अच्छा So आपने डायरेक्टली इनके वेबसाइट पे जाना है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते डायरेक्टली ऑनलाइन. राइट Whether it's for example University of Toronto, right, York University, और colleges की बात करें Centennial College, Seneca College, अच्छा right, and यहाँ private colleges भी है, right? ओके like CDI college, CDI, Average जी, college, right? जी. पर लोग ये भी पूछते हैं प्राइवेट और ये जो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या फ़र्क है, राइट? जैसे और प्राइवेट में ये these are personally funded colleges अच्छा and आपको वहाँ एडमिशन मिल सकता है but just make sure there are designated learning institutions, ओके DLIs, because इसके साथ अगर the designated learning institution उसके बाद आपको वर्क परमिट मिल सकता है. अच्छा एक चीज़ बताइएगा कि ये जो लॉयर के अलावा कोई कंसल्टेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं या इमिग्रेशन नहीं इसका स्टूडेंट वीज़े का स्टूडेंट वीज़ा के लिए एडमिशन का रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट के साथ वो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं आपका बिहाफ. अच्छा आप खुद भी कर सकते हैं ऑनलाइन डायरेक्टली फ्रॉम wherever your country, right? या आप किसी लॉयर से आप कर सकते हैं या आप किसी रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कर सकते हैं, राइट? अच्छा
So saying that you have an option doing yourself or through any so-called licensed individual, right? अच्छा, हाँ जी, राइट वही बात आई थी कि अगर लाइसेंस इंडिविजुअल के साथ आप जाएंगे तो जाहिर है कि वो टेक्निकल चीज़ें देख के आपका सारा काम कराएगा। हाँ जी, इस पर ये हम देखेंगे, ठीक है, इसका एडमिशन लेटर हम अटैच करेंगे, राइट, तो प्रूफ ऑफ फंड्स भी अटैच करेंगे, इसका बैंक स्टेटमेंट, राइट, बैंक स्टेटमेंट हम अटैच करेंगे, राइट, वी विल मेक श्योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड, कोई एप्लीकेशन में कमी नहीं आया, कोई पेश नहीं आया, राइट, इफ यू नीड एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कोई एक्सप्लेनेशन लेटर्स जो अटैच करेंगे, राइट, वी विल डू दैट नेसेसरी एज बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट सिनेरियो, ऑन केस टू केस बेसिस, बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस, हम adjustment करेंगे, right? We will do exactly based on their circumstances, and we will submit accordingly to IRCC, right? Based on their personal circumstances, and to try our very best to get them and have their student visa to be approved. Right. जैसे अब यहाँ पे जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इनका सिलसिला होता हैगा, तो ये थोड़ा सा देखने वालों को बताएगा कि इनका सबका सेम प्रोसीजर होता है या एजुकेशन सिस्टम क्या है यहाँ? Admission के बारे में बात कर रहे हैं. So admission, there are different requirements. Quite colleges, depending on some of them has lower threshold, some have high threshold. Right. With the say GPA, grade point average. अच्छा. उस पे वो determine करते हैं, right? So that's what they ask for your transcripts. वो आपका transcripts देखेंगे. Right. वो आपको देखेंगे आपने क्या grades लिया, right? अपना courses में लिया, अपना programs में. So every college university has a different criteria, right? Right. University is towards the higher, right, compared to the colleges, right? The master program, even higher program, right? All based on your grades of your previous courses and your previous programs. What they can get, will evaluate करेंगे. And हर college university का different grading system है, right? So इसलिए मैं कहता हूँ don't apply to one, apply to many. सिर्फ एक कॉलेज आपने सिर्फ ये सोचा मैंने इसी कॉलेज यूनिवर्सिटी पे जाना मैं यहीं अप्लाई करूँ, मैं कहता no, apply to multiple. Maybe you will get in that one, maybe you'll not get in that one. अगर आप multiple apply करेंगे या maybe half will say yes, half will say no. Right. And जो yes कहेंगे फिर आप further आप देखेंगे, ठीक है, ये तीनों ने जवाब दिया, हाँ कहाँ, फिर मैं देखता हूँ उस पॉइंट पर आप देख सकते हैं आपने कहाँ जाना है फिर। राइट। जैसे सब एक चीज़ और ये बताइएगा कि जैसे स्टूडेंट्स आते हैं मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटी से, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, तो जब वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो गवर्नमेंट इमिग्रेशन के लिए वो क्वालिफाई कर सकते हैं और वो क्या अप्लाई कर सकते हैं इसमें? ये सबका अलग अलग हिसाब है। हाँ जी, मैंने बात भी किया था DLI, याद है, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। जो एप्लीकेंट आ रहा he should go online on the IRCC website and make sure जहाँ वो अप्लाई कर रहा वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन should be designated. अच्छा। So college university should be a DLI, designated learning institution. Okay. अगर वो DLI है फिर उसके बाद इनको वर्क परमिट मिल सकता है based on the length of their course. Right. So अगर वो इसको work permit मिल गया पर he could legally work, he or she could work legally in Canada. Right. And अगर इनको अपना field में job मिल गया पर अगर एक साल के experience के बाद they could apply directly for immigration, permanent residency to Canada. Okay. Right. After getting their 1 year work experience. Right. तो वो उनके लिए helpful रहेगा। Both helpful. So इसलिए I stress to the viewers that inshallah ta'ala जब वो apply करेंगे that they make sure that their education institution is designated. It has to be a designated learning institution, right? अच्छा। The college universities just make sure that it is, okay? Right. तो ज़ीशान साहब जैसे स्टूडेंट है उसने IELTS पास कर लिया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, then what's the next step? Admission हो गया, अच्छे grades ले, right? And they can work part time as well. They can work there, but just recently, last month in December, the IRCC has now permitted students to work full time. अभी वो full time काम कर सकते हैं, first time in history due to labor shortage. अगर आपको एडमिशन मिल गया पहले prior to the new regulation it was only 20 hours per week. आप सिर्फ 20 घंटे काम करते एक हफ्ते में। हाँ नहीं, मेरा सवाल असल में कुछ इस तरह का था कि स्टूडेंट अभी पाकिस्तान में ही है, IELTS पास कर लिया उसने और एडमिशन हो गया, देन आगे क्या करें? हमने वेट करना, हमने अप्लाई करना फॉर द स्टूडेंट वीजा के लिए। सो जस्ट गेटिंग द एडमिशन डजंट मीन दैट यू विल बी सक्सेसफुल। इसका ये लोग एक मुझे एडमिशन मिल गया अभी मुझे वीजा भी आना है। हाँ नहीं, हाँ मैंने काफी मुझे इट डजंट मैटर, यू नीड एडमिशन फर्स्ट, राइट? एडमिशन आ जाए, आपने फीस भी पे किया, आपने IELTS भी लेकर, राइट, एवरीथिंग इज देयर। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑल डिपेंडिंग ऑन द कैनेडियन फेडरल गवर्नमेंट वो अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें भी ये है कि आपका नहीं भी हो सकता है? हाँ जी, नहीं भी हो सकता है। आपने फीस भी भर दी, आपने IELTS पास कर लिया,
सब कुछ हो गया, एडमिशन आ गया, लेकिन यू आर नॉट 100% श्योर कि वो हाँ जी, and because you know why? Because मैंने खुद काफ़ी rejections, refuse letters from खुद मेरे पास आए, right? अच्छा. And they said based on lack of scope of employment in your country. Right. So you should make sure you pick a course जहाँ आपका जहाँ से आप आ रही दुनिया में, या पाकिस्तान या इंडिया से या any other country, वो उस country में scope होना चाहिए. अच्छा. Right. They should have a scope. If you don't have a scope, if there's not demand in that country, they may refuse it, or they may refuse it based on your financial assets. Okay, ठीक है, आपने first semester का दिया, but they need to show how you're going to support yourself in Canada. Meals, accommodations were expensive, right? The books, yeah. right? Everything, traveling costs, right? Any additional costs, you need to show proof of funds that you could survive in Canada. Right? For long term, right? इसलिए वो लोग कहते हैं मैंने first semester fees भी दिया, but your separate income is not sufficient because you need to show that you could survive for the entire year. Right. Based on your savings. जी, जैसे कैनेडियन सिटीजन बच्चे होते हैं यहाँ पे और हाई स्कूल करके निकलते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो गवर्नमेंट ओसैप देती है उन्हें. जी. इस तरह का कोई प्रोग्राम बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए है? Scholarships आपके पास अगर you can apply online for scholarships. अच्छा. Not you can't get a loan. Okay. Maybe based from their country, home country. अच्छा. अब ये देखना अगर वो पाकिस्तान से शायद वो इनका government, maybe their Ministry of Education might give them some grants. अच्छा. If they're studying to Canada, and they might give them some loan, right? So for example, मैंने UK से किया था, right? Other visa. मैं खुद as a Canadian citizen, I studied in the UK, right? Okay. And the Canadian government gave me 1/3 of a OSAP, right? Loan. So Canadian government did help me. Right. To study abroad. So my advice to the viewers is that they contact their respective governments and their ministries of education, right? And they ask them for if they're providing any grants, any loans, or if you're in Canada, maybe they could apply directly to the colleges, universities based on scholarship. And how do you get scholarship? Based on your merit. अगर आपका mashallah, if you're getting 100%, 90% of all your subjects, then you should maybe try to apply for scholarships. Right. But the universities they do give scholarships to the very intellectual and students, right, from abroad, right? So they really want those students to study at the university, so they're willing to pay for their fees as well, because they want to have the best students studying at the university, the most sophisticated, the most intelligent, right? Studying there. जैसे साहब कोई स्टूडेंट पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आता है और जैसे यहाँ पे जो लोकल सिटीजन हैं उनके तो इंश्योरेंस वो कवर है हेल्थ का, लेकिन अगर वो खुदा न खास्ता आके बीमार हो जाता है या कुछ होता है तो उस सिलसिले में क्या इसके बहुत अच्छी सवाल है, right? So for them, they don't have a full, I think, health coverage. They do, but based on their program, right? So just to cut for 1 second, I have to verify this, right? Oh, okay. This is a really good question. Achha. So I'm thinking as I'm speaking to you. So maybe we shouldn't put in the program till I confirm this. Achha. That maybe they do get health benefits if they're a student during their course. We can how they're allowed to work, so then maybe do get some health benefits as well. Right, so I have to verify whether they get the health benefits too. Right. Based on their student. I think the answer is yes, they do have health benefits. Okay. Because I don't think students have the issue. I think they get the health coverage for the duration of their course. All right, for the duration of their course, right? Okay. So, okay, but let's just write these down, these questions, and maybe we've got them to the end after I verify. Okay. Right. जी ज़ीशान साहब, सवाल ये है कि कोई स्टूडेंट किसी भी कंट्री से, चाहे पाकिस्तान से हो या दुनिया के किसी भी कंट्री से आए, अगर वो यहाँ आके बीमार हो जाता है तो उस सिलसिले में क्या करना होता है? जी अच्छी सवाल है, इट्स अ गुड क्वेश्चन. अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ कुछ और बीमार होता है, हॉस्पिटल जाना है, का कवरेज है या नहीं है. अगर वो स्टूडेंट फुल टाइम प्रोग्राम में एनरोल्ड है and for a minimum 1 year, फिर इसका coverage है, right? So basically, Right. So and they should just verify with even before coming with the government to make sure that their coverage is included, that their program is to make sure that it is considered as a full-time program as well. That they're not coming here and it's a part-time program, right? Right. Agar part-time, then they won't get the coverage, right? So they just make sure that it's a full-time studies, and they make sure they verify with the provincial government as well. Jahan ja rahe, right? Because healthcare is based on provincial system, right? Right. So jahan bhi ja rahe ho, you should just contact maybe the school as well. That they have the guidance counselors who can help you there. Okay. Right? So they say, I just want to make sure that I have my health plan covered. Right? So they can even contact the universities and college before coming, and contact the admission. We just want to speak to the right person, make sure I have all my benefits covered, and I have my eligible work permit, eligible health insurance. Just before I come, I want to make sure I tie up all loose ends. जैसे लोकल स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे कनाडा के, उनको काम करने की परमिशन होती है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं क्या उनको भी परमिशन होती है?
हाँ, इनको permission है. Usually what the हमेशा जैसे student का visa के साथ, जी. as students were allowed to work 20 hours per week. 20 hours per week and full time in the summers and off semester during the holidays. Right. But they can recently, just in December of 2022, the Canadian government has permitted all students to now, who are enrolled full time are now and in a designated learning at a designated learning institute to work full time hours, no, without restrictions. Like for 40 hours per plus overtime as well. Plus, so due to the labor shortage. But this is only a temporary measure implemented until the end of December 2023. So following December 2023, it will revert back to the previous regulation, which is 20 hours per during the semester. Right. And that's the government doesn't extend it, right? Right. तो जो काम स्टूडेंट यहाँ कर रहे हैं वो वर्क एक्सपीरियंस क्या इमिग्रेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो काम कर रहे हैं वो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होगा, इमिग्रेशन के लिए मददगार साबित होगा? जैसे मैंने पहले बात किया था आपसे, जब आपका प्रोग्राम खत्म होता है आपके पास ऑप्शन है टू अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. लेकिन उस पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपके लिए अपने फील्ड में चाहिए. अगर वो बंदे का फील्ड में है, right, experience, he could try to apply that to the program, right? Because most students here are, जो मैंने खुद देखा observation, are not working in their fields. They're just trying to survive. They're just trying to pay some of their fees. They're working basically labor jobs, maybe in the restaurants, right? But if they're in the restaurant and tourism hospitality sector, they're studying that. Right, there's possibility of transferring that work experience because the thing is you need to have 1 year full-time work experience. And this cannot involve unpaid internships. They're not accepted. But if they're getting paid and it's considered as experience, even though it's part-time, so maybe depending at the end of the program, if they want to contact me or any other lawyer, then we could, based on their case, we could see whether or not we could try to raise that previous experience to count towards their what's it called, work experience to apply for permanent residency. Right, बिल्कुल. और जो like during the studies वो काम कर सकते हैं, जैसे आपने बताया था कि अभी गवर्नमेंट ने सर्टेन आवर्स भी वो वेव किया. हाँ जी, उसको ख़त्म किया अभी. हमेशा यही था 20 घंटे they're allowed to work during the work week and after during the holiday seasons full time, like the summer season, right? But लेकिन अभी जैसे मैंने बात किया, just until the end of this year, until the end of 2023, students are now are allowed to work full time. So ये अच्छी बात है students के लिए. वो अपने यहाँ का स्टडी भी कर सकते हैं, यहाँ full time काम भी कर सकते हैं. अच्छा. तो वो काम जो यहाँ वो कर रहे हैं वो इमिग्रेशन में काउंट होगा based on the type of work they're doing. अगर आप अपना field में, it has to be the field, right? अगर for example they're studying in IT, right? If they're working at an IT job, right? Per इनका IT experience, we could see whether or not it could be accounted, right? Especially if it's paid and not unpaid, right? It can't be an unpaid internship, as I mentioned. Right. If it's an IT company, they're working part time. Then based on that experience, they could come to me or any other lawyer, and we will assess whether or not we could use that experience, to add to the Canadian work experience. Right. And just मैंने बात किया, if it's a hotel and tourism industry, if they're studying hotel tourism at school, maybe we could use that experience and move it and to use it towards their permanent residency application when considering Canadian work experience, right? अच्छा. राइट. तो ये एक चीज़ ये बताइएगा ज़ीशान साहब के जैसे कोई स्टूडेंट पाकिस्तान से आ रहा है तो अगर उनकी फैमिली भी साथ में आ रही है तो क्या फैमिली काम कर सकती है यहाँ पे? दे आर लीगली अलाउड टू वर्क? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपका. वेरी गुड क्वेश्चन. सो दैट्स गुड. आपका सवाल helps me, right, to share my knowledge with the viewers. So what happens is, if you're married, you could apply for an open work permit for your spouse. Right, she'll be a dependent, right? So based on the length and study of your program, अगर आपका 2 साल का course है, you could apply, for example, we just say hypothetically, whether the husband gets the admission or the wife gets the admission. If the wife gets the admission, the husband could apply for we could apply on their behalf for open work permit. Based on the duration of the wife's course. So during that time, the husband could work legally in Canada. Right. And if they have any kids too, we get admission. तो बच्चों का भी है कि वो पब्लिक स्कूल में जा सकते हैं या उनको फीस देना पड़ेगी? That's a really good question as well, because I think the school does have requirements too that you would have to pay fees because they're coming internationally, right?
right? So, and I know that they have certain requirements to schools, right? So, Right. but if for example, at the end of the day, well, I've seen both. I've seen from my own experience as an immigration lawyer, I've seen where the parents had to get who are open work had to pay the school some fees, international fees in public school, and I've also seen where the school's education says no, the children have the right to be educated. Okay. So regardless, that shouldn't stop them from getting Right. an education, because it's universal right of a child to get an education. Right. So you would have to work up to a plan out with the school, and you would have to compromise with the school, and they will Right. get other people, government agents involved to see maybe to get a subsidiary for you, depending on your financial circumstances, depending on your immigration circumstances. Right. Right. So you have to look at it when you come to Canada. You have to look at the circumstances there. Or there's many people who enroll about private schools as well, right? So if you enroll in private school, obviously you would have to pay. But when Right. coming to public schools, as I mentioned, some of the parents had to pay, and some parents didn't have to pay, Oh, okay. depending on the circumstances. राइट स्पाउस जैसे फैमिली के साथ आया हुआ जो स्पाउस काम कर रहे हैं अगर वो उनकी जो फील्ड है उसमें है तो क्या उनका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो इमिग्रेशन में हेल्पफुल रहेगा? Definitely helpful, right? So Canadian experience is we have one category called Canadian experience class. Oh, okay. Right? So based on your age, based on your qualifications, based on your IELTS test, right? Based on all your points, अगर आपके पास 1 year experience है Canada में, then you can go ahead and apply. अच्छा. अगर वो province में कोई require, maybe you're working at a occupation demand. एक there's occupation demand fields. Maybe you're working in the occupation demand field. Because based on the experience, you could then transfer to direct PR program, right? Oh, okay. So based on your already work experience, and some don't even require 1 year. Some require 3 to 4 months experience, based on the province. For example, in Newfoundland, because I just did a client's case from Newfoundland. You have to only work several months, 3 months experience. Show, look, I worked 3 months at this job. It's a valid job offer. He's willing to give me a full-time job here as well. And he will support my application for permanent residency as well, the employer. So depending on the province as well. Because in Canada, Mr. Federal, there's lots of provincial programs as well. Just मैंने पहले भी बात किया in one of our earlier episodes, right? जी. So it's a case-by-case basis, and depending on all the options as well. Right. So that's why it's really important to consult a lawyer, so he can tell you of all your different options available for you. Right. Right. जीसान साहब थैंक यू सो मच प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है Thank you. मैं अपने देखने वालों से कहूँगा कि कोशिश हम पूरी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर करें और जितनी मालूमात अपने हैदर टीवी देखने वालों को पहुँचा सकते हैं पहुँचाएं, लेकिन ज़ाहिर है कि इतने महदूद वक्त में मुश्किल होता है सारे पॉइंट्स को कवर करना। लेकिन अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं, तो हैदर टीवी के स्क्रीन पर नंबर और ईमेल एड्रेस चल रहा है, आप ज़ीशान रज़ा साहब से रब्ता कर सकते हैं, उनसे सवालात अपने पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपने दोस्तों का गिरदरमा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।